At this moment, we are inside a COVID hospital in the area of Dharavi in Mumbai city. Now, Dharavi, as we all know, often called Asia's biggest slum, is a very, very congested area, and it's emerged as one of the epicenters of this pandemic. We're talking here of about 8.5 lakh people living in a 2.4 square kilometer area. And as of 10th May, there have already been more than 800 cases from here and 27 deaths. Now, we are coming to you from inside the COVID hospital, the first COVID hospital of Dharavi, which is the Sai Hospital. It's a 50-bed private facility, and we are going to talk to some of the heroic frontline warriors here, the doctors. We have a team of the 3 doctors here. We have Dr. Wagmare, we have Dr. Pachnekar, and we have Dr. Shignapurkar, and we're going to be understanding from them कि अभी क्या challenges हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं. आप ये सोचिए कि आप एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. आप एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया और एक ऑफन गरीब एरिया, अंडर डेवलप्ड एरिया की भी बात कर रहे हैं. तो और आप देख रहे हैं यहाँ डॉक्टर्स फुल पीपीई किट में हैं. हम लोग भी अपना पीपीई किट दिल्ली से लेके आए हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू स्ट्रेन एनी रिसोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल्स. सो वी बॉट आवर ओन पीपीई किट्स एंड दैट इज़ व्हाट वी आर वेयरिंग. आपसे शुरू करूँगी. द मेन चैलेंज सर अभी ऑन द ग्राउंड. Main challenge is that cases are increasing very rapidly, and we are very constrained of the beds available, and beds is a constraint. And another thing is that which patients are patients which are very serious and having ARDS, pneumonia, they are not getting beds. But at our facility, we mostly take, it's a CCC2 facility. That is, we take asymptomatic and mild patients. Yeah. We don't have ICU here. So main constraint is availability of staff. I just want to share my own experience. मैं शायद 4th टाइम इस रिपोर्टिंग में पीपीई पहन रही हूँ, और जब मैंने पहली बारी पहना तो आई वॉज सो अक्यूटली क्लॉस्ट्रोफोबिक इन 1 hour वेयरिंग दिस. मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे ऐसे लगा कि मेरा सांस घुट रहा है और मुझे भागना पड़ा बाहर टू टेक इट ऑफ. नाउ दिस वॉज 1 hour ऑफ पीपीई. यू ऑल आर वेयरिंग दिस पीपीई 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे. कैसे सांस लेते हैं? कैसा होता है कि अगर तुम खुद को बचाओगे तो दूसरों की सेवा कर सकते हो. तो इसके लिए पहले अपने आप को बचाओ. अगर तुम बच गए तो दूसरा भी बच जाएगा. तो यही होता है कि जिसको प्रॉब्लम हो गया है, कोरोना हुआ है, वो आइसोलेशन में जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो वो बच जाएगा. अगर वो आइसोलेशन में नहीं गया, ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो तो खुद जाएगा. आपने बिल्कुल ठीक बात बोला, लेकिन फिर भी सांस लेना, आप भी इंसान हैं, मुश्किल होता होगा. देखो कैसा रहता है कि हम डेमोक्रेसी वाली पब्लिक है, खुली हवा में जीते हैं, लेकिन जब भी हमको ये नाक मुंह बंद करके काम करना पड़ता है पहले 4-5 दिन, तो इट इज़ अ रियली मीन्स कांट इमेजिन ऑल्सो. लेकिन कैसा होता है, जिंदा रहने के लिए यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑल द थिंग्स. आपके फैमिलीज़ में भी काफ़ी फिक्र रहती होगी. डेफिनेटली फैमिलीज़ में तो फिक्र रहती है. सो ऑलमोस्ट 300 डॉक्टर्स आर रनिंग देयर ओपीडीज एट प्रेजेंट इन धारावी. हम लोगों ने सिर्फ, आप बोल रहे हैं कि पीपी किट पहनते हैं, लेकिन हम लोगों ने धारावी के डॉक्टर लोगों ने सब साथ मिलकर, मैं डॉक्टर अनिल पाचनेकर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम लोगों ने धारावी में डोर टू डोर जाके 47,500 लोगों का डोर टू डोर सर्वे किया. फैंटास्टिक. उसमें हम लोगों ने 4,000 लोगों को क्वारंटाइन में भेजा. उसमें हम लोगों ने 443 पब्लिक को लैब टेस्ट के लिए भेजा. आउट ऑफ दैट 83%, 20% केम पॉजिटिव. आपने बहुत हेरोइक काम किया है. एज डॉक्टर्स आर सेइंग दे हैव बीन गोइंग डोर टू डोर. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टेप इनसाइड अ लिटिल बिट एंड गिव यू अ सेंस ऑफ द साई हॉस्पिटल. रिमेंबर वी विल नॉट बी आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल पेशेंट्स. वेयर यू सी इंडिविजुअल पेशेंट्स, इट इज़ विद देयर कंसेंट. मेनी पेशेंट्स हियर आर ऑल्सो रिकवरिंग. दे आर स्टेबल. They may have come in positive, but they are hoping to be discharged. In fact, many are that we meet today are going to be discharged any moment now. In fact, in the next couple of hours of us being here. But the doctors have highlighted the shortage of spaces. This hospital, which is owned by run and owned by Khalid Sheikh, is a 50 bed facility. Sir, हमने ये भी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे, और ये मुझे थोड़ा खतरनाक लगा कि डिस्चार्ज होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद सिम्टम्स हैव रिटर्न्ड एंड देयर हैव बीन डेथ्स इन धारावी. तो इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? I think most of these patients were having comorbidities.
they might be having heart elements, diabetes element, and other chronic illnesses. That's why the cause might be previous illnesses, but patient might have treated successfully for 14 days, and afterwards by their chronic illness they might have died. धारावी जैसे एरिया में आप एक सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? No, this is the major problem in Dharavi. Basically, people are staying in a small room, and in one room you can see 8 to 10 people staying. And we can say that social distancing is required, but it is very difficult in area like Dharavi or most of the slum areas and where child system is there. It is definitely difficult. If the camera just turns around, you will see, a very typical sense of a small hospital, but yet this hospital heroically sprung to service. It was the first hospital, and it is a private hospital, which is rare. कि जब भी मैं दवाखाना धारावी में अकेला काम कर रहा था फ्रॉम द डे वन, तो पब्लिक ने मेरे को पागल समझा. एंड देन आई टोल्ड देम द थिंग इज़ दैट अपन डॉक्टर लोग हैं, अपने को मालूम है कोरोना वायरस क्या होता है, अपने को मालूम है इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. वी आर द वॉरियर्स. हम लोग इसमें सोल्जर्स है. अगर सोल्जर्स ही वॉर फील्ड छोड़ के भाग जाएंगे तो वॉर कैसे जीतेंगे? आप सोल्जर्स हैं, आप हीरोज़ हैं, लेकिन एक डिफरेंस है कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जहाँ बहुत लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं. आपने ये देखा है या एक्सपीरियंस? इस डिजीज़ के बारे में जो सोशल इशू है, स्पेशली इट हैज़ बिकम अ टैबू. And I think we have to change our strategy. We have to inform people that this disease is not that dangerous. Almost 80 to 90% people are going to get cured. Hardly 5% people will require critical therapy or critical ICU-like setup. So that taboo has to go. We need awareness as far as this disease is concerned, because there is no definite treatment, definite vaccine available. What I feel now, we should change our strategy. Inform people not to worry about this disease, and don't look those patients who are positive differently, because this disease is not going to kill most of the people. That's very well said. What is the biggest problem, sir, you have faced? आपकी पर्सनल लेवल पे जो आपको एंजाइटी है? Personal level pe, we work here for around 6 to 8 hours, but when we go to our homes, I have a small child. The issue is that when I get home, I have to go go to bathroom, clean up myself, and then afterward I can see her. Yes. I have already quarantined myself in other room, and my family stays to other room. Yes. That's the big issue. When we go to home, we can't meet to our loved ones. And it's happening since 1.5 months. Yeah. So that's, you have to be very emotionally strong. It's कैसे रहते हैं emotionally strong? मैडम क्या होता है कि इतना टेंशन आता है, इतना डिप्रेशन आ जाता है, इतना स्ट्रेस फील हो जाता है जब भी घर पे जाते हैं. तभी मेरे दोनों बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है. दोनों बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट? दोनों बच्चों का. और क्या उम्र है आपकी बच्चों की? दे आर 31 ईयर ओल्ड. दोनों भी डॉक्टर है. एक MD कर रहा है और एक डेंटिस्ट है. कब हुआ था ये ट्रांसप्लांट? 4-5 साल पहले हुआ था. तो यू मस्ट बी वेरी वरीड अबाउट देम. तो इतना टेंशन आता है घर पे जाते वक्त. दिन भर काम करते वक्त कुछ नहीं लगता है. अपने बारे में हम लोग कुछ सोचते नहीं, क्योंकि हमको दुनिया को कुछ देना है, इसके लिए हम लोग काम करें डॉक्टर. बट टेल मी, आपके दोनों बच्चों को किडनी ट्रांसप्लांट है, विच मीन्स दैट दे आर इन अ वल्नरेबल ग्रुप. यू मस्ट बी सो स्कैर्ड कि कहीं मुझे इन्फेक्शन हो जाए और मैं अपने बच्चों को. तो मैडम वही तो बोल रहा हूं. व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर चिल्ड्रन? माय चिल्ड्रंस नेम इज, दे आर ट्विंस, लव कुश, डॉक्टर लव, डॉक्टर कुश. And they are both doctors. They are both doctors. That's wonderful. Yes. But you must be very worried. So that I am always, in a deep state of tension. Yes. कि I have to be very careful that I should not pass it on to my family members and all. So I salute all of you, and I also salute all the other doctors here. Personal anxiety is a very real thing for doctors. Doctors are also human beings. All the doctors worry about going home to their children and families every day. They worry about possibly transmitting the infection. So I just want to end by saying that as we report from Dharavi, one of the toughest areas to actually contain this pandemic because it's so crowded. This is a small hospital, a 50-bed private hospital, which is a COVID hospital inside Asia's largest slum, as Dharavi is known. But these doctors are doing the opposite of small. They are doing a giant service to humanity, and we thank all of you. I would like to one take-home message that this coronavirus is not going to go in a near 1 or 2 years. So now you should try to live with this coronavirus. Well, let's just see the thumbs up for winning the battle against corona. And I'm going to raise a thumbs up, not because I'm doing the heroism that they're doing, but just because we want to toast these wonderful doctors.